elbow joint. Laterally is the supinator extensor carpi radialis brevis and common extensors. So, radial collateral artery is a branch of profunda brachii artery. Radial recurrent artery is a direct branch of radial artery. Behind the lateral epicondyle are two arteries, posterior descending artery and interosseous recurrent artery. The posterior descending artery is a branch of profunda brachii artery, and interosseous recurrent artery is a branch of ulnar artery. Here you can see all the four arteries: radial collateral artery, radial recurrent artery. Then is the posterior descending artery and interosseous recurrent artery. In front of the medial epicondyle are inferior ulnar collateral artery, which is a branch of brachial artery, anterior ulnar recurrent artery, which is a branch of ulnar artery. Behind the medial epicondyle are superior ulnar collateral artery, which is a branch of brachial artery, and posterior ulnar recurrent artery, which is a branch of ulnar artery. So, anterior ulnar recurrent arteries and the posterior ulnar recurrent artery. Then are the superior ulnar collateral artery and inferior ulnar collateral artery. Nerve supply includes the ulnar nerve, radial nerve, median nerve, and musculocutaneous nerve. The movements which occur at the elbow joint are flexion and extension, since it is a hinge joint. The muscles of movement are brachialis, biceps brachii, and brachioradialis. The extensors include the triceps brachii and anconeus. Carrying angle. Transverse axis of elbow directed medially and downwards. Extended forearm is not in straight line with the arm. It makes an angle of 13 degrees. The factors responsible are medial flank of trochlea hangs 6 mm lower than the lateral flank. And the other factor responsible for formation of carrying angle is superior articular surface of coronoid process of ulna is placed oblique to the long axis of bone. Here you can see, once you are standing in anatomical position, your arm is not in straight line with the body, it makes some angle. This angle is called carrying angle and it is of 13 to 15 degrees. It disappears in full flexion and pronation of forearm. Clinical correlates include tennis elbow and golfer's elbow. Tennis elbow, also known as the lateral epicondylitis, involves inflammation in the tendons of forearm muscles where they attach to the bony prominences called the lateral epicondyle. So the tennis elbow is lateral epicondylitis. Golfer's elbow is a repetitive stress injury that can cause inflammation, swelling, and microscopic tears in the tendons that connect your forearm to inside of your elbow. This is medial epicondylitis. स्टूडेंट्स एल्बो. सो बेटा स्टूडेंट्स एल्बो तब होती है जब इस तरह इन पोजीशंस में आप बैठते हैं और एल्बो पर प्रेशर पड़ता है तो आपकी इस जगह पर ओलिकनॉन बर्सा होता है. इस बर्सा की इन्फ्लेमेशन की वजह से यू फील पेन इन योर एल्बो. सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओलिकनॉन बर्सा, उसको ओलिकनॉन बर्साइटिस भी कहते हैं एंड ऑल्सो कॉमनली नोन एज स्टूडेंट्स एल्बो. कमिंग टू क्यूबिटस वेल्गस एंड क्यूबिटस वेरस. बेटा ये दो कंडीशंस हैं जो कैरिंग एंगल है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने से होती हैं. क्यूबिटस वेल्गस. Forearm deviates away from the body's midline when elbow is extended. Carrying angle of the elbow 5 to 15 degrees होता है normally, जो कि क्यूबिटस वेल्गस में इंक्रीज कर जाता है. ये कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है. मोस्टली क्यूबिटस वेल्गस में अल्नर नर्व फाल्सी होती है और इसको करेक्ट करने के लिए वी डू ऑस्टियोटोमी. सो दिस इज क्यूबिटस वेल्गस जिसमें कैरिंग एंगल इंक्रीज कर जाता है. Cubitus varus, forearm deviates towards the body's midline when elbow is extended. Carrying angle is decreased or absent, sometimes leading to gunstock appearance, जिसमें आपका हाथ बिल्कुल बॉडी के साथ जुड़ जा रहा है. Most commonly caused by malunion of supracondylar fractures of humerus where the bone heals in a rotated position.
इसमें भी अल्नर नर्व की कंप्रेशन होती है, और सिमिलर टू क्यूबिटस वैल्गस इसमें भी हम ऑस्टियोटोमी करते हैं। दिस इज क्यूबिटस वायरस जिसमें एंगल बिल्कुल डिसअपेयर कर जाता है। की डिफरेंसेस वेल्गस और वेरस में क्या है? डायरेक्शन ऑफ एंगुलेशन, वेल्गस में वेल्गस एंगल्स आउटवर्ड्स एंड वेरस एंगल्स इनवर्ड्स। थैंक यू।